ask me how I know. I followed them and said they told me so. Everybody ask me how I. Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing absolutely well. It's second day in the Rishikesh. So अभी just मैंने चेक आउट करा मेरे हॉस्टल से। ये पीछे ये येलो कलर का है, ये हॉस्टल था। हॉस्टल से बाहर आते ही ये भैया की शॉप है, राफ्टिंग वगैरह करवाते हैं। तो अभी 16 किलोमीटर वाले तो अपन राफ्टिंग कर रहे हैं। तो लेट्स, अभी आएंगे 10-15 मिनट में, तो चलते हैं। Guys, we are heading towards our rafting to Shivpuri. Shivpuri will be the start point, and we will end our rafting near to Ramjula. And I had a new friend, Gaurav from Faridabad. He just sharing his experience of Leh Ladakh. अभी राफ्टिंग के लिए शिवपुरी आ चुके हैं। तो व्यू देख के ही लग रहा है कि इट्स वेल गोना फन। व्यू देखो यार आप। Enjoying in Rishikesh. So rafting is done. I check out from hostel and अभी ऐसा प्लान है कि to visit Betals आश्रम, एंड बीटल्स आश्रम के बाद सीधा घर। सो बीटल्स आश्रम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है शायद। तो लेट्स सी कैसे पहुँचते अपन बीटल्स आश्रम के पास। थक तो पहुँच चुका हूँ, बट बीटल्स आश्रम भी विज़िट करना है, तो लेट्स गो। हेडिंग टूवर्ड्स बीटल्स आश्रम। 1 घंटा बचा है क्योंकि 4 बजे वो बंद हो जाता है, और 1 किलोमीटर और आ गया है बीटल्स आश्रम। इट्स 3:55 PM in the evening and I am at Betals Ashram. This place is just made for the meditation, and I am exploring this place with my friend Sam. Hello. Whenever you are coming to Rishikesh, you should visit this place at once. So we are sitting in this ashram and relaxing for a minute. So I'm heading back to by 5 or 6 o'clock, and Sam is gonna have his plan to put Shimla for 2-3 days, and it's fantastic. Traveling gives you new friends, new experience. Hope you like the video. So that's in this video. See you soon in the next video. Till then, bye bye, take care.